Okay, Vivek, let's proceed ahead with your mock for IIT Hyderabad, that is additive manufacturing. So, your background is what? You are production engineer? Yes, What's sir. your background? Production engineer, and gate also in production and industrial engineering. So what are your favorite subjects in manufacturing engineering or production engineering? Metal cutting and welding, and I What? have also some basic idea of additive manufacturing as well. Okay, welding and what did you say? Metal cutting. Metal cutting and welding, huh? Yes, sir. So can you tell me the mode of material removal in metal cutting? Uh, How's the material removed in metal cutting? What is the mode? like single point cutting tool and multi point cutting tool. Actually, I was asking about plastic deformation. You know, plastic deformation is the main Yes, mode sir. through which material Yes, is sir. removed. Yes, sir. Can you tell us something about the chips? Chips. Yes, sir. Chips is a there is many processes where we form the chip like milling, turning, and No, I'm when asking we about the types of chips, Vivek. okay, sorry, sir. Continuous chip, build up edge chips, and discontinuous chips. What if I'm cutting ceramics? Ceramic discontinuous chips will produce in that. Do you call powders also discontinuous chips? The kind of powdered chips which are formed, Yes, sir. Discontinuous. they're called discontinuous. Yes, sir. So what if I supply coolant? So if we apply coolant, then definitely there is chance to continuous chip produce in that if the Hmm. material is ductile. Hmm. Okay, tell us something about the materials of single point cutting tools. Materials like high speed steel type. In that some tungsten and chromium and vanadium. Like Hmm. 18% tungsten, 4% is chromium, and 1% is vanadium. Can you tell me the this particular nomenclature of the cutting tool? Yes, sir. ASA and ORS, Hmm. American Standard Association and Orthogonal Hmm. rack Tell me system. more about that. How to Sir, specify? yes, sir. In American Standard Association, we are टूल के रेफरेंस पे हम लोग सारे एंगल को डिफाइन करते हैं एंड इन ऑर्थोगोनल वी टूल के रेफरेंस से उसको सारे प्लेन को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल एएसए में हमारा होता है एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ट्रांसफर प्लेन एंड रेफरेंस प्लेन, एंड इन ऑर्थोगोनल कटिंग प्लेन एंड ऑर्थोगोनल प्लेन एंड रेफरेंस प्लेन. Vivek, have you heard about non-conventional machining processes also? Yes, sir, but I have little idea of that. Do you know why they are used? Why not conventional machining? Why non-conventional machining? So because some workpiece are very hard, we can't able to remove the some part or sorry removal of material in that workpiece. So we have to use the non-conventional like abrasive jet machining, like ultrasonic machining, and some of more. But I have recognized this Can types. you tell me something about laser beam machining? Laser beam machining. Removal will be take place by the applying the laser in the जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हमको लेजर डिपॉजिट करना है, वहाँ से हम लोग रिमूवल वहाँ से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना हमको चाहिए. And what about the TIG welding? TIG welding. TIG welding. Okay, tungsten. Okay. So, sir, tungsten we are using when we have to weld the thin part like aluminium and tungsten. So, yes, sir. Not tungsten, titanium. Sorry, aluminium and titanium. हम लोग फ्लक्स की जगह पे वहाँ पे गैसेस यूज करते हैं लाइक आर्गन एंड हीलियम, जो हमारा वहाँ पे सारे जो भी डर्ट होता है उसको रिमूव करता है और हम लोग उसके अंदर वेल्डिंग कर सकते हैं. और हम लोग इसमें इसीलिए यूज करते हैं एल्यूमिनियम और टाइटेनियम की, क्योंकि इसका सुटेबल फ्लक्स नहीं मिलता है, इसलिए इसी के लिए हम लोग ने अलग से एक वेल्डिंग प्रोसेस बनाया जिसको हम लोग टिक कहते हैं, टिक वेल्डिंग. Vivek, I give you a metallic plate, and on that metallic plate, I want to write your name, Vivek, on the Yes, sir. metal plate. Okay. Which process should I use for this? Yes, sir.
I think wire welding type. We are using the wire and उससे हम लोग remove करते हैं और हम लोग नाम बना सकते हैं. शायद उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पर we are using the wire as a Wire electrode. cut EDM you are talking about? Yes sir. Yes sir. Wire EDM you are talking about? Yes sir. Wire EDM. Why you choose wire EDM? Sir, sorry sir, no idea. But मैंने वो प्रोसेस देखा है. अच्छा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग केरोसिन के अंदर की जाती है. आर यू अवेयर अबाउट दैट? केरोसिन के अंदर. यस सर. डाइलेक्ट्रिक होता है ना केरोसिन. यस सर, डाइलेक्ट्रिक होता है. वो इनफ्लेमेबल, वो बहुत उसमें आग लग सकती है. यस सर. यस सर. तो हम प्रोड्यूस कर रहे हो. यस सर, तो हम लोग को पूरा पैक करना पड़ता है. लाइक हम लोग को वैक्यूम पूरा क्रिएट करना पड़ता है. अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी एयर है तो बम कर जाएगा. वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे आप? सॉरी सर, नो आइडिया. Okay, over to you, Rahul. Yeah, Vivek. So, do you know about additive manufacturing? Yes, sir. I have little idea about it. Yeah. So, can you name any 3-4 additive manufacturing processes? Yes, sir. I can classify the additive manufacturing. There are two types. First is metal additive manufacturing, and second is polymer additive manufacturing. In metal additive manufacturing, first is selective laser melting. Second is electron beam melting, and third is laser metal deposition. And in polymer additive manufacturing, first is laminated object manufacturing. Second is selective laser sintering, and third is okay, that's fine. I just want to know this. So why it is called rapid prototyping, this additive manufacturing? सर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रैपिड प्रोटोटाइप एक प्रोसेस आता है और उसके अंदर हम लोग उसको यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको एक स्मॉल स्केल पे हम लोग को एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है. So rapid prototyping means like there is one process in additive manufacturing which is yes, called sir. rapid. Yes, sir. I don't think so. Are you sure? Yes, sir. Additive manufacturing के अंदर आता है. So additive manufacturing को हम पूरा पार्ट बना सकते हैं उससे पूरा machine. I mean, like if we have to make a assembly, can we make it with additive manufacturing? Yes, sir. मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा है जिसमें L&T ने एक पूरा हाउस बनाया. Use of additive manufacturing. Okay. So what's the difference between selective laser sintering and selective laser melting? सर सिंटरिंग में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से अंदर रहते हैं और ग्लास समथिंग उसको कुछ समथिंग कहते हैं, मुझे को नाम याद नहीं आ रहा, पर हम उसके बिटवीन रहते हैं सिंटरिंग के अंदर. सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग के अंदर और सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग के अंदर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर रहते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर हम लोग को यस सर दो पाउडर के बीच में हम लोग वेल्ड करते हैं सिंटरिंग के अंदर और मेल्टिंग के अंदर उसके अंदर बीच में बॉन्ड बन जाता है. I mean, why we have different this processes? You have in the end you have to just fuse two particles, right? Yes, so why sir. in one case we are taking temperature beyond melting point, and in one of the case it is below melting point? Why it is so? Yes, sir. No idea. Okay, so if you get a project on additive manufacturing, so you are interested in that, right? Yes, sir. Why? What is your motivation? Why you want to go to additive manufacturing? Sir, because this is a new process and सारे नए नए processes हम चाहते हैं कि additive manufacturing से हो जाए क्योंकि first of all ये हमारा time बचाता है, काफी time बचाता है. I don't think so. Additive manufacturing is very time consuming process. If you have to make a small part, it will take 12-13 hours, while you can make that similar part with casting in 1 or 2 hours. So it is not a time-saving process. Any other advantage of additive manufacturing? Complex shape we can easily produce in that. Okay. And yes, okay. sir, Do you know any research project which is going on additive manufacturing in IIT Hyderabad? No. Okay. But yeah, so, I have interest in one research like metal pool dynamic. That we have. Yeah. Okay. So other thing is you are aware about laser welding, right? Laser welding, you know. So in selective laser melting, we also have one laser.
So do you know, is there any kind of stresses in both the process? No idea about that. Okay. So can you tell me about selective laser melting, how we print the materials? Do you know the steps of selective laser melting? Yes, sir, yes, sir. First, we have to create the 3D CAD model. Then we convert it into .htl file. Then the process will start. First, the laser is जहाँ पे हमको जिस जिस एरिया पे हमको चाहिए तो वो पहले मेल्ट करता है, फिर देन हम लोग एक लेयर क्रिएट करते हैं, फिर बैक साइड जाते हैं, फिर वापस एक लेयर क्रिएट होता है, फिर एक लेयर डालते हैं उसके ऊपर, फिर लेयर को एक बार हम लोग प्रॉपर शेप में लाते हैं रिटर्न में, और उसके बाद वापस लेजर उस पर ड्रॉप करते करते हम लोग को एक फाइनली प्रोडक्ट मिलता है, और उसको हम लोग ले लेते हैं बाय वैक्यूम क्रिएट करते हैं, पहले सारे पाउडर को हटा लेते हैं, फिर हमको फाइनली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हमको मिल जाता है. So do you think is there any problem in this process? कोई Yes, sir. disadvantage? Yes, sir. डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग को लेजर का जो पावर है उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है. अगर कहीं पे ज्यादा हो गया तो वो होल क्रिएट कर देगा, और जहाँ पे कम हो गया तो वहाँ पे पोरोसिटी क्रिएट हो जाएगी. तो हमको इसका ध्यान रखना है. In selective laser melting, we use argon gas. Are you aware about that? In the chamber where we are doing selective laser melting, we are using argon. Do you know why? So no. Okay. What happened in electron beam melting? Electron beam Yeah. welding. We use the beam. Electron beam. Why we can't use laser in that? Okay, so in electron beam melting and selective laser melting, there is one difference. In one of the process, we are using this argon. Other one, we are creating a vacuum and we do this electron beam melting. Do you know which process is expensive? What do you think? Okay. So I think I'm done, Dr. Vijender, if you have any question. Okay, so Vivek, I will ask you one more question. So it is called additive manufacturing. What is the meaning of additive in this? Sir, additive, it's mean we are adding some material by layer by layer fashion. Conventional manufacturing can also be additive? No, sir. It's a subtractive manufacturing. Always? Yes, sir. Can't I say casting is also sort of additive? Or welding for that matter, because in the flux you are adding certain things. वेल्डिंग को हम लोग एडिटिव कह सकते हैं, पर कास्टिंग तो हमारा एक डायक हमको रॉ मटेरियल देता है, लाइक इनगॉट, बिलेट और ब्लूम के शेप में जो हमारे रिक्वायरमेंट है. फिर उसके बाद फर्दर हम लोग प्रोसेस करते हैं, लाइक इन मेटल फॉर्मिंग. मेटलर्जी के बारे में पढ़ा है आपने? यस सर. इज दैट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ओनली? मैन्युफैक्चरिंग नो सर. वो समथिंग कास्टिंग जैसा कुछ फॉलो करता है, लाइक जैसे हम लोग रॉ मटेरियल को मेल्ट करते हैं, उसके अंदर फिर हम लोग को लाइक कास्टिंग मिलती है. पाउडर में भी हम लोग उसके अंदर प्रोसेसेस कराते हैं, लाइक सिंटरिंग, ब्लेंडरिंग, फिर उसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. What about forging? Forging is additive or subtractive? सर जीरो, लाइक ना ही ऐड होता है और ना ही सब्ट्रैक्ट होता है. उसके अंदर जस्ट हम लोग कन्वर्टेड वन शेप टू अनदर शेप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. Okay, Vic, let me give you the feedback and then Rahul will give. So, मेरे को लगा नहीं आपका knowledge manufacturing में बहुत अच्छा है, Vic. You are faltering in manufacturing. You are production engineer. Yes, sir. Manufacturing के मेरे को snap interview ज़्यादा मिले नहीं है, तो interview question का ज़्यादा idea नहीं. Welding के बहुत से पढ़े हुए हैं वहाँ पे, पैनल पे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं. आप एक बार गोविंद से डिस्कस करो. Okay, मेरे को welding के ज़्यादा नहीं है. Welding है, cutting है, casting है, उसके पढ़े हुए हैं काफी ज़्यादा. और आप लगाओ भी, स्नैप लगाओ, मेटल कटिंग का लगाओ, अपना सकलानी सर के साथ लगाओ. और विवेक तैयारी करो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग द फर्स्ट पार्ट है जो पूछ रहे हैं वो लोग. उसके बाद वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, राइट? यस सर. तो रिवाइज इट वेल. व्हेन इज योर इंटरव्यू? सर आज था, पर 23 हो गया. पता नहीं कोई रीजन की वजह से. अब यस. चलो, इट्स गुड. यू हैव गॉट 2 days मोर. सो रिवाइज द मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स. एंड वो वीडियोस देखनी है राहुल सर के जो पड़े हुए हैं पैनल पे. ऐसा देख लिया, सारे देख लिए. बस वो लास्ट के 2 वीडियोस कुछ ज्यादा डीप में, तो उसको एक बार तक वापस देखना पड़ेगा.
और ये जो क्वेश्चन पूछा था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है IIT हैदराबाद में, दैट इज वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। यस सर मैं अभी वही नेक्स्ट स्टेप है मेरा। ओवर टू यू राम सर। So Vivek, one good thing about you कि मैंने ये देखा है कि तुमने ज्यादा bluff नहीं किया है. I mean, you directly say you don't know. That's a good thing. But I would say like if you don't know the answer, think about it. Then you can say like I don't know, or you can give relevant information. Then you can say I don't know. But additive manufacturing में भी मैं ये कहूँगा कि I mean like additive is not a basic subject. If they are going to ask basic questions, they will ask from this conventional manufacturing. Additive में एक दो क्वेश्चन बनते हैं, why additive manufacturing, and like is there any project work you are interested in that, so you have to answer that very carefully. The rest of the thing, एक आध उसमें research problem देख लो. This stresses thing is very important in additive manufacturing. What kind of stresses is there, so you can check that. But मुझे लगता है कि हो जाएगा. But yeah, manufacturing part you have to prepare. Metal. Done, Vivek? Yes sir. So prepare well, Vivek.